जोनाथन जावेद, जी सर, आवाज आ रही है और बेटा स्लाइड्स नजर आ रही हैं? बिल्कुल सर आ रही। I think we left only 3 or 4 maybe students, and then we will summarize and then we will summarize our this session, and there will be a question session after that. Everyone has to answer the questions correctly if they want, or if he or she wants some good marks. So it was really good activity, and many students perform very well, but it is not good that more than 50% students didn't present. Anyhow, we will जी बेटा, वालेकुम सलाम. I think I already told you guys, and I already teach you this. Sorry. Raise your hand first. प्लीज बच्चों, कुछ तो सीखो यार. ऐसे जुल्म मत करो अपने ऊपर भी और हमारे ऊपर भी. इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों पर, कल को फिर टीचर्स और माँ बाप के ऊपर ब्लेम आ जाता है कि कुछ नहीं सिखाया. जी आयशा, तो बस तुम बोलने बेटा, क्या बोलना है आपने? सर मुझे लगा मेरी वो प्रेजेंटेशन। सॉरी बेटा, मैं आपको भी मौका देता हूँ प्रेजेंटेशन का. अभी आपकी प्रेजेंटेशन ही है. स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर. प्लीज कंटिन्यू, फ्लोर इज योर्स. थैंक यू. Assalamu alaikum. Myself Aisha Kasum. I am a student of bioinformatics. I have grip on computation tools like Modeler, Camera, Chimera, PyMod, etc. I also published a research paper named In Silico Elucidation of Potent Drug Targets of Melanocyte Stimulating Hormone Receptor. Melanocyte Stimulating Hormone Receptor protein, also known as melanocortin 1 receptor, MC1R. It is involved in melanogenesis. Melanogenesis is the complex process by which pigment melanin is produced in melanosomes by melanocytes. I worked in dry lab. I predicted the 3D structure of MC1R. Also predict least binding energy, zinc 131 compound. Also develops novel drug target by using comparative modeling, threading approaches, and different computational tools like Modeler, Swiss model, ITSS. On these, I have good expertise on these approaches. To approve my work, I want to perform wet lab experiments on my work. Kindly you grant me an opportunity to do work with in your institute to approve my work. Thank you. Assalamu alaikum, sir. I'm Usman Ali. In silico application of potent drug of melanocyte stimulating hormone. This is my paper that is recently published in Biomedical Letter. MC1 gene providing structure for making protein called melanocortin 1 receptor that play important role in neuron pigmentation. इस पेपर के अंदर सर जितना भी काम है वो मैंने सारा का सारा ड्राई लैब में काम किया, जिसके अंदर वेरियस कंप्यूटेशनल अप्रोचेस को यूज करते हुए मैंने MC1 प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसको प्रिडिक्ट करवाया, डेवलप करवाई, नोवेल ड्रग टारगेट्स को डेवलप करवाया, और उसके बाद लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिंक कंपाउंड उसको हमने आइडेंटिफाई किया बस जितने भी कंप्यूटेशनल यूज है उनको यूज करते हुए. ये जितना भी काम था सारा का सारा काम जो ड्राई लैब पे किया. तो अब मैं, क्योंकि ये जितना भी काम है सारा पब्लिश हो चुका है, लेकिन इसको अप्रूव करने के लिए मुझे चाहिए कि वेट लैब में काम करने का मौका दिया जाए, ताकि मैं अपनी एक्सपर्टीज को वेट लैब के अंदर शो करूं, और इसका जो मैंने अपना रिजल्ट पब्लिश पेपर पब्लिश करवाया उसका जो the 3D structure of protein थे novel drug targets, वो नेक्स्ट साइड के अंदर मैंने रिजल्ट के अंदर शो करवाए हुए हैं. तो ये जितनी भी एक्सपर्टीज है वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में शो करवाई है. तो इसके बिहाफ में मुझे वेट लैब में काम करने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं और उसको इंटरनेशनली अप्रूव करवा सकूं बाय थ्रू यूजिंग वेट लैब. थैंक यू सर. Good evening, everyone. My name is Jonathan Jue, roll number 82002, BS Bioinformatics semester.
सो मैं आज अपना आर्टिकल ही डिस्कस करूंगा जिसमें मैंने डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करते हुए उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करवाया। सबसे पहले मैंने थायराइड कैंसर 1 प्रोटीन ली जिसके अंदर 106 अमीनो एसिड की जिसके 4 टाइप्स हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल जो सा थायराइड कैंसर की प्रोटीन है उसको डिस्कस करूंगा। इसका फ्लो चार्ट इस तरह के, सबसे पहले सीक्वेंस एनालिसिस की। सीक्वेंस एनालिसिस में हमने जीन पोजीशंस, उसकी अलाइनमेंट, उसकी फैमिली के साथ, उसकी अमीनो एसिड की कॉम्पोजिशंस, ये सारा हमने एनालाइज किया। देन वी गो फॉरवर्ड फॉर स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में हमने स्ट्रक्चर को डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर के जरिए जो सा हमने इसको प्रेडिक्ट करवाया। फिर हमने उसी स्ट्रक्चर को, उसकी वैल्यूएशन, उसकी वैलिडेशंस को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स और डेटाबेसेस को यूज करते हुए उसकी वैल्यूएशन और वैलिडेशंस की। और इसके बाद हम प्रोटीन डॉकिंग गए जिसमें हमने इंटरेक्टिंग प्रोटीन ली LSM1 और उसके हमने डॉकिंग करवाई ग्रामर्स के जरिए। ग्रामर्स के उसके बाद में हमने इंटरेक्टिंग रेसिड्यूज फाइंड किए कैमेरा विजुअलाइजेशन टूल में। देन वी गो फॉर द प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग। उसमें हमने FDA लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी से हमने ब्लाइंड डॉकिंग करवाई जो कि फायरक्स के जरिए थी। और फायरक्स के जरिए हमने एक लीस्ट जिसकी सबसे एनर्जी लीस्ट एनर्जी थी जिस कंपाउंड की, उसको हमने उसकी ड्रग डिजाइनिंग की। सो द होल प्रोसेस इज इन अ फ्लो चार्ट, या इसको पाथ पे कह सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये कंपटीशन ड्रग डिजाइनर्स की। और आई होप कि मैं इसको अपनी बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में आगे जाके इसको और बेहतर अपनी मेडिकल फील्ड के लिए, अपनी लाइफ साइंसेस के लिए और अपनी जितनी भी कैंसर रिलेटेड स्टडीज़ है उसको बेहतर करने के लिए इसको आगे इम्प्रूव करूँगा। और इसी एक्सपर्टीज़ की बेस पे जो सा है मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में इसको लेके दूसरों को बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म दूंगा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नज़र से लेते हुए। Thank you so much, everyone. So everyone was very good. Okay, anyone wants to say something, please raise your hand. If anyone wants to say something. Ji Almas Anwar. Sir, can I start my presentation? ओके बेटा, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप उसके बगैर 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। Yes, sir, I can. Okay, the floor is yours. Your time starts Assalamualaikum. now. Please start. Okay, sir. Hi, everyone. I am Almas from Muzaffargarh, and I have done my schooling from Misali Higher Secondary School, Muzaffargarh, and then I used to choose GCUF for my graduation and further studies. Recently, I'm doing a graduation in bioinformatics, and I have worked on computational analysis of ATP7B protein from ATPase family. First of all, I have done sequence analysis of that protein, and that protein is related to Wilson's disease, that is an autosomal recessive and genetic disorder. In sequence analysis, I have used two bioinformatics online tools named Ensemble and UCSC Genome Browser. And then I predicted the structures of that protein using threading approach and homology modeling approaches. In homology modeling approach, I used Modeler 9.14
software in which I have blasted the target sequence against PDB structures, PDB, and selected the best templates for further analysis of that structures. And then ITERSER and Swiss model was used to predict the structures of that protein. After structure prediction, for evaluation of tools, I used UCSF Chimera, and then to check the quality of quality of that structures, and to evaluate the structures, Rampage and Nolia error tools were used. Then molecular docking was done for the predicted structures in molecular docking, stitch and string, the two online tools I used to analyze the interacting partner of target protein. And then I used patchdoc for protein interaction analysis of ATP7B. After that, virtual screening was done, in which a zinc library was used to see the molecule with least minimum binding energy. And in that, Thank I you so blocked much, beta. Your time over. Thank you so much. Anyone else want to say something? Thank you so much. Anyone else? Please raise your hand. Hassan. There was a guy named Hassan. Hassan is not present in our class. Okay, maybe he again has that connectivity issue. Anyone else? Aksa Gyas 80039. You didn't present. I remember. जी बेटा बोलें. सर हमारा जो ना लाइट ऑफ थी तो इस वजह से कनेक्ट नहीं You हो पा want to रहा था. present now or not? यस सर. Okay, your time starts now, please. अस्सलाम वालेकुम क्लास. My name is Aksa Gyas. My roll number is 80039. I can run different bioinformatics tools for different purposes, like for sequence analysis, for structural prediction, and identity. Recently, I worked on protein one and write a research paper. This protein in acid systematic analysis in dosage. This disease effects. We cannot hear you, Aksa Gyas. सर अब आवाज आ रही? Bit better. This disease affects females more commonly than males. Use different in silico approaches to predict the structure and protein protein to find interacting protein. I use in database and final structure help out to design the effective drugs against acid. Thank you बेटा. अलमास अनवर बेटा आपका रोल नंबर क्या है? Your roll number please. Sir, roll number 9. 9. Okay, Fatma Noreen, roll number please. Anyone else want to tell me about her roll number? Sir, 53. Fatma Nuri. 53. What Yes, about sir. Najma? Najma Roll number Hamid. 18. 18? 18. Thank you. You guys did not even write your roll numbers. I don't know why. Okay, thank you everyone. It was a good activity. I really appreciate some students. First of all, almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Almost 50% of students didn't present and got a very beautiful 0. Trust me, it's a very beautiful 0. Hafiz Hanan presented very well. Shehroz, Aksa Gyas, and Manzoor Hussain just plagiarized all the data. They just use the same slide, just change the names and use the same slides. I don't know why. So they totally plagiarized the data. That's really not good.
After that, I really appreciate Nagin Fatima, Aisha Tabassum, and yes, both of the students. Nagin Fatima and Aisha Tabassum totally presented in English. I really appreciate that. Maybe you are on an international level, so you should present in English. And Nagin Fatima totally presented in English, as I remember, and Aisha Tabassum. Saba Ansar and Aisha Tabassum, I again appreciate both of you. You guys were very calm. Your words were very clear to understand. Your tone was very good. Your nervous level was really good. I really appreciate both of you. Yes, I have Saba Ansar has some content issues, but she was calm and clear about her words. Aisha Tabassum presented very well. Hafiz Hanan presented very well. Nimra Asif presented very well. Khansa Asad elaborates his project very well. And this was some summary from my side for the students. Jonathan Javed and Usman Ali were both were very confused and used so many times. We did this, we did this, we did this, we. So you guys were very confused. I don't know why. Tanavi Shejaz, she's here or not? Tanavi Shejaz. So she has so many grammatical errors and typographical mistakes and even spelling mistakes. So please proofread before showing your data to someone. Okay, now it's question session. Sharoz, 46. Hafiz Hanan, 08. Hafiz Hanan, 08. Zunaira, Takshal, Komal Naz, Asif, Tanavi Shajaz, Hassan, Aisha Zahoor, Nimra Asif, Khansa Asad. Yes, sir. जी बेटा कोफैक्टर किसे कहते हैं? कोफैक्टर सर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. Thank you, Almas Anwar. Yes, sir. Your presentation was very good. You are also very clear in your words, and you also presented in much content in English. Your presentation was really good. Okay, so what Thank was your you. protein name? The protein you utilize? Sir, ATP7B. You presented very well about the procedure you performed in the experiment. So what is the key function of this protein? The key function is that it is a copper transporting protein. It makes sure to balance the copper availability in Thank you. every Thank part of you. body. 10 Amna. Roll number 10 Amina. Amna, sorry. Yes, sir. Ji beta. What is prosthetic group? Okay. Prosthetic group now. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज की जाती हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में? 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए जी हेलो जी बेटा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज की जाती हैं? होमोलॉजी मॉडलिंग, एब इनिशियो अप्रोच और थ्रेडिंग. आरिफा मुरातिब. 39 रोल नंबर अक्सा गियास. अक्सा गियास. मरियम. मुंतहा सलीम 41. तैयबा 19. तलहा असरार 38. नगीन फातिमा 35. सोहा मुनाफ 04. आयशा असलम. फातिमा नौरीन 53. नगीन फातिमा. जी बेटा एक मिनट, फातिमा वेट करिएगा. नगीन फातिमा बेटा किधर थी आप क्वेश्चन सेशन में के दौरान जब आपका नाम लिया गया? माइक नहीं ऑन हो रहा तो मैं बोल रही थी. जी जी अच्छा जी. होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए कितने % क्यूरी कवरेज को कंसीडर किया जाता है रिलायबल रिजल्ट्स के लिए?
40%. 40%. Okay, thank you. Fatma Noreen. Yes, sir. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में कितनी आर्मस्ट्रॉन्ग की रेजोल्यूशन हो तो स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है? थ्रेशोल्ड वैल्यूज क्या हैं उसकी? Sir, 1 Armstrong. 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. बिलाल 40 रोल नंबर. कोमल अरशद 57. मंजूर हुसैन 44. मंजूर हुसैन 44. मंजूर हुसैन every नगीन फातिमा प्लीज म्यूट योर माइक. ओके, मंजूर हुसैन. मंजूर हुसैन, ये स्लाइड्स आपने बनाई थी? यस सर. तो आपने क्यों शरोज और अक्सा को दी? वेरी बैड. सर मैंने पहले यूसुफ को सेंड किए थे और तनाव से बोल रही थी, मुझे नहीं पता सर, बाकी साथ में खुद ही शेयर कर ली. दिस इज नॉट अ गुड एक्ट मैन. लेजर्ड हो गया ना आपका डाटा. आप अच्छा प्रेजेंट करके और मेहनत करके भी उन जीरो पर आ गए. क्यों ऐसे? किसी को कंटेंट, अगर उन्होंने आपसे कंटेंट, आपको तो पहले देना ही नहीं चाहिए था. अगर वो आपके ट्रस्ट वर्दी लोग थे और आप उनसे कंटेंट शेयर कर रहे थे उनकी हेल्प के लिए, तो फिर उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि सिर्फ आप नेम बदल दिया और फोन बदल दिया और वो समझते हैं कि पता नहीं चलेगा. दिस इज नॉट गुड. सर मैंने बोला था उनको कि अपना लिख लेना, ऐसे मैंने बनाई है, जैसे भी है देखो आप ना खुद बेटा, अपना बना लेना आपका कैसे बनाना. ट्रस्ट वर्दी लोगों ने आपके साथ क्या किया है, तो आपको देखना चाहिए ना कि आपका कंटेंट कॉपी हो रहा है. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, शरोज की सेकंड नंबर पे आई थी प्रेजेंटेशन, अक्सर गयास की यस सर. ऑलमोस्ट 15 नंबर पे आई, एंड देन यू वर ऑन ऑलमोस्ट 25. लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया सारा कंटेंट कॉपी है. ये नहीं कि आपकी साथ साथ आई थी. यस सेम सर. इवन के शरोज एंड अक्सा गयास ने तो सिर्फ नाम बदला हुआ था, जिधर उसने बोल्ड किया हुआ था वर्ड उन्होंने भी किया हुआ था. दिस इज नॉट गुड. वेरी बैड. आप अच्छे स्टूडेंट हो बेटा, इस तरह मत करो. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए थ्रेशोल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग कितना कंसीडर किया जाता है अच्छे स्ट्रक्चर के लिए? सर एक्सरे में सर उसमें होता नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू. थैंक यू. 18 नजमा हमीद. Yes, sir. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में थ्रेशोल्ड कितने आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू को कंसीडर किया जाता है? Sir, 3 Armstrong. वेरी गुड बेटा. ओके, शहजाद 21. सबा अंसर. आयशा तबस्सुम 45. Yes, sir. जी बेटा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी. सो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगी आप? Sir, sir मुझे आता है. उस्मान अली 24. उस्मान अली 24 रोल नंबर. यस सर. हेयर. जी उस्मान अली, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? सर क्लस्टर होगा. क्या ये प्रोटीन के लिए होगा या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी यूज होगी? सर ये न्यूक्लियोटाइड के लिए होता है. न्यूक्लियोटाइड के लिए होता है, प्रोटीन नहीं यूज हो सकती? सर दोनों हो सकती है, दोनों के लिए दोनों लाइन करेगा मल्टीपल की. थैंक यू. 02 जोनाथन जावेद. यस सर. why you Yes, were sir. why you was very nervous? आपने बड़ा अच्छा वो काम जमीन किया था, मुझे याद है सेमेस्टर में आप बड़े. लाइट गई थी. वाओ जोनाथन, यू रॉक. सर मैं डेटा चला रहा हूँ, मैं सर छत पे बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से डेटा जोनाथन मोबाइल हाथ में मेरे पकड़. जोनाथन रॉक्ड, अरसलान शॉक्ड. आप क्यों नर्वस थे सर? लाइट चली गई थी. एनी हाउ, मुझे याद है आपने सेमेस्टर वर्क में और रिसर्च वर्क में बड़ी अच्छी काविश की थी और बहुत ही अच्छा काम किया था. आई रियली अप्रिशिएट दैट. So, but you was bit nervous during this. I hope next time you will overcome your nervousness. So, बेटा इसका यही मकसद है ना सिखाने का, कि अगर sometimes आपके पास कुछ unwanted सी situation हो जाए तो आपने अपने आप को कैसे हैंडल करना है. Anyhow, you was very good. Thank you so much. 03 शाहरुख हसन.
Thank you so much, everyone. If anyone has any question, please ask. Nagin Fatma, do you want to say something, or otherwise just lower down your hand? Sir, I have a question. Sure, Jonathan. सर ये नंबर कब पता लगेंगे हमें? नंबर कब पता लगेंगे? आपको किसने कहा मैंने नंबर लगाए? सर आप कह रहे क्या कह लेक्चर सुना आपने दिया ना 6 मार्क्स आपने रखे थे। यस सर। नहीं तो वो मैंने रखे थे, लेकिन मैंने ये आपको कब कहा कि मैंने मार्किंग कर ली है? सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप कब मार्किंग करके या मैं ये बता हम्म। जब आप बताएं जी कब नंबर चाहिए आपको? जब आप अवेलेबिलिटी जब आपकी अवेलेबिलिटी हो, जब आप इजीली दे दें। जी उस्मान क्या कहा? एक बच्चा एक वक्त में बोले। जोनाथन बोलो। जी तो मैं जोनाथन। कहता जब आप इजी हो तो आपकी अवेलेबिलिटी जहाँ पे हो आप दे दें। ओके, हो गया। और नगीन फातिमा, आप गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो आपका क्या मौकफ है इस पे? जब भी आप चाहें बता दें। चलें, ठीक हो गया जी। और एवरीवन स्कोर वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन। नंबर आ गए हैं। सबने बहुत सर अच्छी। रिसीव्ड योर मार्क्स। ओके, नॉट माय मार्क्स, इट्स योर मार्क्स। On the behalf of Anyhow, everyone struggled very good. Just try to improve your weaknesses, and the marks, or just finding the weaknesses of others doesn't mean we are just saying that that person is less or that person is above one. It's just Usman, please mute your mic or mute your cousin. So it doesn't mean to just lower down someone or just rise some students. This activity just for learning and how we have to find our positive points and negative points, strengths and weaknesses. As I observe some strengths from some students, and I just mention it here for their more improvement, and I also just point out some weaknesses from some students. So please try to overcome that for your betterment. It will be, or it would be, help you in your future. Try to improve your vocabulary, try to improve your communication skills, try to improve your literature. As you know, literature is the door for new ideas. If you will do good literature every day, you will have much more good ideas and vocabulary. If you want to improve your scientific drafting, please do good scientific literature. And I suggest you, because you are on BS level and it's almost finished now, I will consider all of you as an MPhil student from next month, or the level of an MPhil student. So I must suggest you, please try to read at least one research paper in a week, at least in the start, at least one research paper from a very good journals and publishers. So it will help you to improve your vocabulary, your scientific drafting, your communication, and your ideas, your personality. So try to read at least one research paper in a week, and just underline the new words, hunt it and explore those words from dictionaries, from your teachers, from Google, from internet, and try to be a good researcher. And students, if you want to make your career in scientific domain as a researcher or a scientist, so then you have to struggle very hard. No matter in which domain you are going, you have to struggle very hard. You have to struggle very hard. If you want to be a one, you have to struggle very hard. So everyone just present very well. I really appreciate everyone, and I hope you guys learn much more from this activity. You guys can understand, or can have to understand, that how you have to control your nerves if you have only 2 minutes to describe something, and how you have to gather the words, and in 2 minutes
It's not an art what we have to describe, what we have in our mind. It's an art what we have to describe in 2 minutes from the bulk of data from our mind. So this is an art in actual. uh, it's very easy to draft difficult, but it's very hard to draft very easy. If you want to write very easy words for others, or you want to express your ideas, or you want to express your thoughts, your research work, your scientific drafting, your opinions, you have to use very simple language that can be understandable for a layman or for a junior researcher or for a beginner. So you guys should have to be very careful in these, and I hope and wish you guys struggle very hard. We will continue our remaining topics and contents in next lecture. Thank you so much for joining. If anyone has any question, please raise your hands. If anyone has any question, please raise your hand. Jonathan Javed. Yes, sir. So we have to conclude the session, or we have something to say? Okay, Nagin Fatima. Any question from girls section? Nagin Fatima. Any question from girls section? Okay, thank वो you. आपसे कहना था जी बेटा, जी बेटा बताएं। बेटा आपकी आवाज कट गई है, प्लीज बताइएगा आप क्या कहना चाह रही थी। एक दो लड़कियों ने ना अपने इश्यू बताए थे कि सर से डिस्कस कर लेना। Beta, if they will be present in next class, we will discuss. So I will mark the attendance who presented. I will mark the attendance accordingly. Thank you so much everyone for joining. Have a good night or have a good day. Thank you so much.